he got a job. Story. The story was that the story was that I arrived in Dubai on the 27th, and I tried to choose in Dubai because I heard that Dubai is more of a kind of very DC place, and I want to see that vibe. So when I arrived there, it's a big building. A lot of Pakistani live there, and we are like 5 to 6 people in one room, and that bunker beds. So कितना कमरा छोटा है बड़ा है उसमें? It's a small room like this one. इस जितना कमरा है? Yeah. वाह, उसमें कितने लोग हैं? उसमें 7, and all of them are workers, proper workers. Like and I'm the only alien there. So first in what way? Alien in a way, like right? I'm more of a kind of educated and stuff. तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा अफसर आया हूँ इधर. पहले तो उनको स्टार्ट में पता नहीं था कि कौन है, किधर से आया. And slowly when I make friendship with them, उनके मुझे मसले पता चल गए. Mostly were like job search people. 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए जॉब से आए हुए. तो there was 3-4 people, उनकी CV बना दी मैंने. अच्छा. तो उसमें से एक बंदा है, उसका इशू ये था कि he was really serious about the job, and I tried to make friend with him. Now I see what was the approach when you are looking for a job here. I come from Pakistan. So वो जब भी बाहर निकलता था ना, खाने के निकलता था, तो in Dubai you see the flyers of different companies, marketing promotion. तो उसने बड़े सारे flyers इकट्ठे किए हुए, like the flyer from a AC service company, from a cargo service company, home delivery service, food service. उसके पास बहुत सारे flyers. तो मैंने कहा इस flyers का क्या कर रहे हो? कहते हैं I want to work in these companies. मैंने कहा आपको पता है these are all sales and marketing promotional flyers, but I was really curious by his approach कि इसको पता है कि इस companies के अंदर jobs होंगे. Like for example he have one of the Kareem delivery flyer. वो कहता है मैंने इस Kareem में बाइक चलानी है. तो he got those details and now try to look for a job. तो उसमें से एक कंपनी था, उसमें AC टेक्नीशियन वाला जॉब था. वो था कंपनी का फ्लायर था. तो उसकी वेबसाइट पे मैं गया, उसकी लोग मैंने निकाले. मैंने कहा देख ये कंपनी अच्छी है, ऐसा करो कल सुबह ना कपड़े पहन के इस कंपनी में घुस हो जाओ. और बेवा में उनका ऑफिस भी. एंड ही रियली लिसनिंग, ही वेंट देयर. तो वहाँ जैसे ऑफिस में किया गया कि फ्लायर पकड़ा हुआ है हाथ में, कहते हैं मैं इधर आया हूँ जॉब के लिए ना, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क. दे से दिस इज आवर सेल्फ प्रमोशन, आर यू interested in our service? He said no, I'm interested in work. So उसमें से एक बंदा मिला, ठीक है हम बंदे हायर कर रहे, कल आ जाओ कि इंटरव्यू है. And then yesterday he went there and had an interview with the HR people, and that same person come on from Turkey, and he got himself a job. Now he come back and he tell me this whole story. Today I help him to move out. Now the company give him accommodation, really nice, pick and drop service. Today was his orientation day. They give him a coffee, nice orientation. Nice. Yeah. Nice. And he's like, he's studying matriculation. And he came here with the thought that he's gonna be living a hard life like every Pakistani live here. Like maybe गाड़ी चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, यहाँ पे मतलब पूरी शोरी उठाएगा. But spending just 1 week with him, that person is completely changed. Wow. Completely, his mindset is changed, and now he's dropping me message like every 1 hour, and he said I'm so impressed, and he thinks like I was a miracle for him because उसके अम्मी अब्बू उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, उसकी बीवी है, उसकी 3 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी है और 7 साल 8 साल के 2 बच्चे. तो this whole story when I got to know how happy he is, and वीडियो भेज रहे, तस्वीरें भेज रहा है, उधर कमरे में पड़ा हुआ है, कहता है बहुत बड़ा रूम है, मैं अकेला हूँ. उधर तो आप था उसमें थे बंकर पेट में ना 7 बंदे थे. तो बड़ा खुश था. आज सारा सब कुछ उसके साथ फ़ोन पे बात हुई. And then I feel I'm a sensitive, Yeah. So I feel cry because of happiness. How there are people that they have good attitude to work, a good passion to work, want to improve their life, but someone need to help them, someone need to just guide them. हम किसी को जॉब प्लेट पे लाके नहीं दे सकते कि भाई मैं एक जॉब लगवा. Just that single push. And then that's why to be honest, to coming here today as well, is that maybe when we talking, trying to motivate or influence someone, there are really people out there they're looking for such small push. So that was the whole day, and my work is already going on, but
the happiness I feel today was just because of Kamran. His name is Kamran. And last night before he's leaving, I said, hey, let me give you something else. He said, what is it? I said, do you know LinkedIn? So I make his profile on LinkedIn as well. And now that person has really changed his whole mindset about life, himself, how capable he is. क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, हम किसी के अंदर टैलेंट देखते हैं तो अप्रिशिएट नहीं करते, हम खामी ज़रूर देखते हैं. If you give someone something in front of someone, हमारी सोसाइटी का नेचर है कि हम we are always looking for कि इसमें deficiency क्या है, but we never see what is good in it. Appreciate the good first and then try to suggest कि यार जो कमी है, जो खामी है, उसको कैसे वो करें. And yeah. तो ये कामरान की स्टोरी को तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले तो मुझे बताओ, why are you in Dubai? Oh, I'm in Dubai. Why I'm back in Dubai? That's the question. Why are you back in Dubai? अच्छा, my story starts back in Thailand, you know. उर्दू में अगर हम ज़्यादा Sure. Yeah. अच्छा, हुआ ये कि back in November 2022 मतलब ये मेरे मज़े की जॉब थी थाईलैंड में, सही तनख्वाह भी आ रहा था, पार्टी शार्टी भी कर रहा था, और I was living the dream life actually. 4 साल ज़िंदगी गुजारी, तो फिर मैंने कहा कि the life become repetitive and I wanted to make an impact in a sense of कि यार मैं जब by the time everyone getting old, they measure their success on the scale of impact, not money, because that's we know that, right? How much impact, how many life you have touched, or how many people you have helped, and how many people look up to you, consider you as a leader, consider you as their like a big brother, or like a bada bhai jota. So to that thing I was missing, and in Thailand everything was good, but जो like-mindedness है, जो लोग होते हैं जिससे आप you're sharing the same mindset, you sit somewhere, you talk about something, वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी, because I never feel like I have like-minded people around me where I can talk about job opportunity, where I can talk about business or start up a business or something. The rest, the social life was amazing. So I decided to resign. And my boss asked me why. I said, I want to pursue something and another opportunity where I can make big impact and try to make a name for myself. Especially in my industry, aviation, people should know who is Arshad Khan. Not the whole globally, but in Asia, people should know. So then we had a back and forth meeting and I resigned. और जैसे resign किया तो I took a break. मज़े की बात ये है कि you resigned without having another opportunity. No opportunity. आपने कहा बस that is not what I want. I want to have something different. तो जैसे resign किया, 1 month के साथ resignation दिया, put up किया, back and forth में CEO के साथ one-on-one meeting हुआ कि why you are resigning. अपने manager boss के साथ one-on-one हुआ, 3 one-on-one हुए, लेकिन I said it's not the way नहीं चलेगा. I made up my mind. And then I went back. So the thing is, when I put up a resignation, usually when you do with 1 month notice, मैंने भी 1 month notice दिया. The boss told me, hey, you can go home and relax and find yourself another opportunity. I said, okay, sure. I come back my home. I had the time in my visa. I had the time, 1 month. तो मैं ये था कि now I said I took a big decision. क्योंकि ये decision मैंने इसलिए लिया कि if you want to do something, it's your comfort zone. जिससे आप बाहर नहीं निकलते. मेरा भी ये था कि मैं कुछ करूँ, इम्पैक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, बट जो जॉब थी मेरे पास, it kept me in that comfort zone. So Monday to Friday we work, and Fridays, it's Thailand, is you go out and so you party, you travel. So when I said if I get out of that comfort zone, giving up on the job, then I will take things serious. क्योंकि हमेशा कभी भी आप कुछ करना चाहते हो, it never usually happen from a comfort zone. You have to make yourself a bit uncomfortable to have that push on from behind you. अच्छा, इसमें sorry मैं interrupt कर रहा हूँ, लेकिन I think it's important to clarify कि जब भी आप कभी इस तरह का risky decision लेते हो, एक होता है कि आपने ना सोचा, ना समझा, ना कोई प्लान बनाया और आपने बस रिज़ाइन कर दिया.
which is taking a very risky decision without having done your calculation. So did you do any sort of calculation or you thought कि okay fine आप resign तो कर लोगे, उसके बाद क्या? Like what went into your calculation process? Actually I did a calculation क्योंकि अगर I just switched direct from one job to another, I thought in my perspective that I won't have the job at the time to think and reflect on myself, self-discovery. So that's why I said, hey, how to get out of this job and take some time to reflect on things instead of just getting out of one job and then signing up on another contract, and you don't get the time because एक दफ़ा आपने कंपनी से रेजिग्नेशन कर लिया, वहाँ पे क्लोजिंग क्लियरेंस हो गई, दूसरी पे अब ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होती है, so everything is so rushing and I didn't want that happen. So in the meantime I know that there is job opportunity, but I said I'm not hiring on this. तो जैसे कि जॉब ख़त्म हो गया, मैं अपने रूम आया, then I start my whole discipline, I start saying the first thing is discipline. So I start waking up early, I go to the library, there was a library nearby in the university, I spend time in library, read books, looking for, find people in industry that I can see, and start reaching out to people, say hello, hi to people, especially on digital platform, people dropping message on WhatsApp, writing emails, LinkedIn, hello, hi. And in the meantime, I'm going through this process of self-discovery and self-improvement. I'm sharing the same thing on LinkedIn as well, so people should know what's going on. And I getting the people, responses, people messaging me, and but I didn't ask anyone for a job because usually LinkedIn पे यही होता है. सलाम दुआ होती है और दूसरी मैसेज पे आपको CV भेजते हैं सब ले जाओ. I didn't ask for anyone for a job. I was just in that self-discovery, reflection in that stage. The first thing I did, बाइक में पेट्रोल डाला and निकल गया एक बड़ी टूर में. So it was like 3 provinces tour. I didn't book hotel, so I would travel. I get tired, go to coffee shop, sit there, take a coffee, read something, talk to someone, I have emails or something, then start driving again. तो एक वो बड़ा tour उसमें मैं मोटरबाइक पे मारा. In the meantime, I was always meeting new people. So I'm traveling, I see a nice cafe, and watching YouTubers to get to know what is the best in Thailand, because I know this is going to be the last month in Thailand. I want to explore as well. In the meantime, I was sharing that story with people as well, same time on social media. And then after 2-3 weeks, I said, okay, now I have enough reflection on myself. I post on LinkedIn, I'm open to work. But I said that I would be like to work with the CEO directly or the top management. Because I believe that I don't like to work, in a place where I can't make an impact. If you want to make an impact, where your reporting manager be CEO or either the big guy, the head of the department. आपने basically post किया कि I'm ready for work, और आपने इस पे condition भी लगाई कि you want to work at a place with the CEO, 2 types. Direct work reporting with the CEO or the मतलब confidence से होता है एक बंदे का. Yeah, you can see the post on LinkedIn is still there. And then start people reaching out to me. So I had a friend of mine named Hamza. He reached out to me from Canada. He said, hey Arshad, we had an opportunity for you here in Toronto. Would you like to work? Let's have an interview. I had a phone call with him. I have another friend of mine, we do business together back in Thailand, from India. He reached out. He wanted me to be his consultant, but based in Dubai. I met another person reach out to me in Thailand. He wanted me to work with him, and to sum it up, it was like 5 job opportunity people reach out to me. And then I got a job approach from the company that is in Estonia. My boss messaged me on WhatsApp, hey Arshad, this is Alexander, are you looking for a job? I said, yes, I'm looking for a job, but I would like to make a big impact. He said, send me your CV. I said, hello, I think I know you. We met in the airport show Dubai. He said, send me your CV. Now I'm trying to get to tell him that, hey, I'm not just looking for a job. Yeah. I'm looking for an opportunity where I can contribute. But he said, no, send me your CV. I said, sure. What do you mean when you say you can contribute? Like, iska matlab kya hota hai when you say a place where you can make an impact and you can contribute to something?
like when is the traditional job people do like 9 to 5, right? You got a certain task to do, and you just certain KPI you do like the traditional way. Yeah. मेरा मतलब ये होता है कि अगर you want to work for a company, you have to be open and a big team player. I mean, you can play with, contribute to every department in every way. So there is that you just give your 100% energy, your time to that company in a way that you really care about the brand, you really care about the success or as a whole overall vision and mission of the company. So my contribution was to say that I want to be in a role where I can be a decision maker, because I believe I am in the level that I can make good decisions and with responsibility. I should be responsible for something, and if I take a decision, I should be accountable as well. Yeah. But I just don't want to play a role where I'm just doing work and I can't make decision, I can't have a team, I can't make an impact. When you're trying to say the word impact, means you have a responsibility actually. Yeah. You are in the position. So I speak to the company, I got a contract, and then they say, let's go and get your visa. So I went to the consulate of Estonia in Bangkok on motorbike again, because I just want to travel, change everything. I didn't use the taxi anymore. That 1 month I was on my bike and traveling on everywhere, going by. In the place that I was living, and from there to Bangkok was like 2.5 hours. Wow. I took it on bike. And I went to the consulate. I said, I got this offer letter and invitation letter. I want a visa for Estonia. They say it's a consulate. In that time, I didn't know that the consulate don't have the visa. It's the embassy have the visa. Yes. So we don't give the visa, but in the meantime, the Finland embassy here give visa, so you go apply there. I went to the Finland embassy, and they said it will take 3 to 4 weeks to process the visa. मैंने जब अपना वीज़ा देखा, उसमें सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे. The notice that I give to the company, because Thailand में यह है कि जैसे आप notice देते हो, your notice is expire, they cancel your residency, your visa or permit. So मैंने कहा, no, I can't stay here. What's the next option? I went back to the consulate, and they say, okay, the nearest place to apply here is Estonian embassy in Abu Dhabi. You should go to Dubai. And UAE. तो मैंने कहा ठीक है. Now I was living in Thailand for 4 years. बीच में COVID आया, तो I never got back home, right? So I said, let's go home, spend some time in Pakistan with family, with friends, everyone get refreshed. I'm already in that self-discovery method. I have my Buddha with me for meditation. I bring the Buddha with me as well. I still carry with me because I went to that meditation stage as well, and it really works. If someone wants to speak with me on that meditation, it works. So I packed my bag and goodbye to Thailand, and moved from Thailand with the Buddha, with Buddha statue. I'll buy a lot of souvenirs, bag full of them, but Buddha was for me to do meditation and stay focused. तो पाकिस्तान आया, and पाकिस्तान में महीना 1.5 रहा, वहाँ से फिर टिकट करके इधर दुबई आया, February में आया. February. I was here in February. Now I came here, I prepared my documents here. The first thing was the appointment. So appointment तो 1 महीने बाद मिला इधर VFS Global के साथ. So in the meantime, I'm very productive. What I'm gonna do here? Laying down in the room, I said I need to do something. So I checked out, there was a lot of exhibition going on. World Trade Center Dubai. Yes. I said, wow, let's go, man. So there was exhibition every second week, and I go there, networking, meeting new people, and exchanging business card, and communication, and see. And by the time when I went to UFS office with all my documents, they say, hey, you are a resident here. To apply here for a Shenzhen visa, you need to be a resident here. You are a tourist. तो उन्होंने आपसे कहा कि आप रेजिडेंट नहीं हैं? रेजिडेंट नहीं है. नहीं. You can't fly out from here. You can't apply for a visa. यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ये एम्बेसी में, एस्टोनियन एम्बेसी में, जिस लोगों के पास यहाँ का रेजिडेंस है. तो उन्होंने कहा कि Emirates ID. I said no, I'm a tourist. They say okay, then ask the embassy of the Estonia to give you email confirmation that yes, you are a special case, you can submit.
उसके लिए मैंने एम्बेसी से बात स्टार्ट कर दी. एम्बेसी was not responding. My company was also trying to call them and talk, but finally when they speak, they say, hey, we find out in Pakistan the Hungarian embassy are giving visa for Estonia. Mr. Arshad Khan need to go back to Pakistan. ये तो स्टोरी. मैं पाकिस्तान फिर से चला गया. अब वहाँ चला गया तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा हंगेरियन एम्बेसी में, क्योंकि the thing right now that everyone try to explore and go outside. So all Schengen countries appointments are booked, even the US as well, Canada. और बाकी तो वहाँ पे जो वीज़ा ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए उन्होंने भी एडवांस बुकिंग की and they are selling one appointment for 3 lakh 2 lakh. You know it's really they open a business. बिल्कुल. मैंने भी ट्राई किया, 1,20,000 रुपये दिए, बस I didn't get the appointment. I said give my money back. He back the money, but still 15,000 he keep it. But I say okay. And there I see now it's not happening again. So I tried to reach out to the ambassador of Hungary. And how? ये important point है. Now I tried to look for the embassy website. Who are the big people? They are the big bosses. So on LinkedIn I make one connection from Nast, and she told me that there is a networking event in Serena organized by the Sweden embassy, and most probably Sweden ambassador will be there. So if you go there and meet the Sweden ambassador and ask him that who is the Hungarian ambassador, maybe he'll help you out. I said I got this clue now. मैं गया Serena. I had no idea what's going on, but I just got this thing in mind that if I go there, I talk to them, hey, I have this offer later, I have everything, I need to go to Estonia, but there is no appointment, can you help me? मैं वहाँ पे गया. It was actually an event organized by the Swedish embassy and bringing Business Sweden, which is their Sweden big company as an organization, I think. They promoting their businesses overseas. तो उसमें बहुत बड़ी लोग आए थे, सिंगापुर से आए थे, मलेशिया थे, ambassador was himself there. And luckily there was one lady there. When I talked to the Sweden ambassador, Mr. Hendrik, I said, this is my case and could you help me? He said, hey, do you know who's there? It's Dr. Rina Konka, she's from Estonia, to go talk to her. वहाँ पे मैं डॉक्टर रीना कोनका के पास गया. शी इज़ द EU ambassador to Pakistan. She look after all Schengen. मैं उनके पास गया, and hello, hi, and I introduced myself. I work for this Estonian company. I've been invited to Estonia, but I'm struggling. It's been 3-4 months, and if you don't mind, if you can help me. He said, I'm in a bit hurry, but I will catch up with you again Saturday. We had this small party in my house. You can come there and we can talk. Business card लिया उनसे. And then I met her. She gave me some clues, ideas, and finally maybe she spoke, or maybe the embassy find out themselves that this guy is really struggling. The UAE, Estonian embassy in the UAE tried to email me and say, Arshad, okay, come back to Dubai. And that's how I ended up the second time in Dubai. So I came here, I submit my documents, everything, and now the passport is in Estonian embassy. ये जो स्टोरी है तुम्हारी, ये इतनी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, बिकॉज एनी नॉर्मल पर्सन जो कि मैं जानता हूँ, अपार्ट फ्रॉम अरशद खान, जो नॉर्मल जो लोग को मैं जानता हूँ, वो एम्बेसी में जाके अप्लाई करेंगे, उनका वीज़ा नहीं लगेगा एंड या उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, एंड देन दे आर गोइंग टू कर्स के पाकिस्तानी पासपोर्ट है और जॉब नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है. एंड आपने ना तो थाईलैंड से एग्ज़िट मारा एक, द फर्स्ट थिंग इज़ कि एक आपने एस्टोनियन कंपनी में आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, दूसरा आपने उनको ये बावर कराया कि you want to work with the CEO to have that impact, or आप एक leadership position पे आप Exactly, that's correct word. ये दूसरे एक achievement. That's why they give me the good position, it's a regional sales manager. It's for entire Asia. Yeah, I can have 5 countries for now, but slowly they will grow. Exactly. ये आपने दूसरी achievement की. तीसरी achievement आपने ये की कि आप एक एम्बेसी में आपने ट्राई किया, वहाँ पे आपको नो मिला, आपने दूसरे एम्बेसी में ट्राई किया, वहाँ पे आपको नो मिला, एंड देन आपने वही जो लिंक्डइन पे आपने लोगों को खुद रीच आउट किया था, द गर्ल दैट यू टॉक्ड अबाउट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि आपने खुद एक रीच आउट किया था गर्ल को,
जिसका इस वीज़ा सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं था बट इट ऑल केम टुगेदर. उन्होंने आपको एक लिंक दिया, एक गाइडेंस दी यार यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे खुद जाके यू एसेंशियली मेड योर वे टू मिस रीना जो EU के एम्बेसडर है. मुझे इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ लगती है वो ये कि लाइक द इम्पॉर्टेंस ऑफ पुशिंग थ्रू. क्या 5-6 महीने, कितने महीने हो गए एस्टोनियन कंपनी? 4-5 महीने हो गए. आप उनके साथ रिमोटली वर्क भी कर रहे हो, आप रिमोटली उनको वैल्यू भी ऐड कर रहे हो, और आप साथ में ये पूरी एक जंग भी लड़ रहे हो ताकि आपको अपॉइंटमेंट भी मिले और वीज़ा भी मिले और एम्बेसी के स्टाफ से लेके ऊपर EU एम्बेसडर तक लोगों को पता चल जाए कि अरशद खान कोई बंदा है एंड आपने अपना मैसेज भी पहुंचाया. मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है. लाइक यू नो मुझे इस पूरी स्टोरी में आई थिंक लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ मैसेज आई थिंक पीपल नीड टू हियर के कहीं पर भी कुछ भी आपके लिए हो नहीं जाता. लाइक यू हैव टू ट्राई फॉर इट, यू हैव टू पुश फॉर इट, यू हैव टू डू समथिंग. लोग बहुत ज़्यादा अक्सर जगह कहते हैं कि यार मतलब आप लकी हो गए, आप लकी हो अर्शद, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा वीज़ा लग गया और तुम पहुंच गए उधर. No, that's my thing. The thing is, the more harder you work, the more luckier you get. Exactly. मेरा पूरा थीसिस जो मैं इस पूरे एनालिसिस को बयान कर रहा हूँ, मेरा पूरा थीसिस यही है कि आपका लक आपके हार्ड वर्क को फॉलो करता है. Exactly. जितना आप ज़्यादा पुश करते हो, आपकी सोच नहीं होती कि आज आपने इस डोर को नॉक किया है, 8 महीने बाद शायद ये डोर खुलेगा एंड समथिंग विल हैपन, बट you need to knock that door. You need to reach out to these people. You need to make yourself known. You need to talk to people and actually introduce yourself कि यार ये मेरा नाम है, ये मैं करता हूँ, this is what I can do for you. पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है, to be very honest with you. Like ये मुझे बहुत ज़्यादा fascinate करती है. Thing is that you know sometimes even I'm human as well. You might have the question that in 4 months after this all struggling, why you didn't give up? Yeah. And I can't. This was my question. Yeah. And I told my manager, hey, this is not gonna happen. It's gonna take me time. You know, time लगेगा वापस दुनिया आने में. I need you to get me to work. I need some work. Yeah. He said, you come here. Like every week, my manager, Arshad, figure out your visa. When are you coming to Estonia? Now, not only my manager, now my company colleagues start messaging me. When are you coming? What's happened to your visa? Well, every company, everyone is now worried. So I said, okay, what we do, I think it's going to take me time to come there. Send me the stuff. My onboarding stuff. So he said, sure. Send me your address. So I was here in Dubai for the first time. They sent me laptop, business card, product browser, phone, SIM card, everything. And they said, start working. Okay. So I built that enough trust that I have the company email with me, official Outlook, and the company phone, the company laptop, and the company trusts me that I'm here. I never met anyone. मैं किसी से भी नहीं मिला कंपनी से, ठीक है. ये मुझे बहुत ज़्यादा ये बात ना मतलब फैसिनेट करती है. क्या मतलब this is such a good example to tell people कि it is all possible. बहुत सारे लोगों के दिमाग में माइंड ब्लॉक होता है कि ओ अगर मैं इधर बैठा हूँ, I cannot work in Estonia, I cannot possibly get an opportunity in Estonia with a Pakistani passport. Like हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिलीव कि एक इनसिक्योरिटी है कि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट. हाँ ठीक है, चैलेंजेस the passport is that they are challenges है. Yes, the passport is not stopping the opportunities. Yes, exactly. The passport is making the problem when it comes to traveling. Exactly. We're making the mistake here. Yes, when it comes to traveling, it's hard to travel with this passport. To getting visa, like you know, I got rejection for Singapore in March. There was a big exhibition of my company. My company wanted me there. They booked the hotel for me, the ticket for me, €700. Wow. Yeah, and then I had to pay the half. My manager said, okay, we pay the half, you pay the half. Now, and I got rejected because the agent filled the form incorrectly. Show me married, show me I'm going there for, tourism, luxury. Yeah. So there is some mistake we make as well. But when it comes to opportunity and doing something out of the box is the mindset of what I call the champion mindset. Mostly people believe that when they're starting something they always think about the failure. Yeah. कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो they don't think I will succeed, I will win. They always have the fear कि मतलब मैं हार जाऊँगा,
नहीं होगा. Now this thing, if you have the back of your brain, that's what I say, the fear of failure, then you get a bit, doubtful of your action, you get doubtful of your struggle, your belief. और मेरे केस में ये है कि I never think, like you told me that Arshad, you never take no for an answer. Yeah. So your visa process appointment, I said, okay, no appointments in the Hungarian embassy, but what's the solution? I wrote to the embassy, hey, I know, I'm sorry for this, but I want an alternative for me, what we can do. So the thing is, if that is the attitude, कि आप सही कह रहे हो कि यार मसला तो है, but what is the solution? Yeah. And always try to, to find for alternative approach. I believe anyone can find an opportunity anywhere where it belongs, where the person talents belong. You can make it to anywhere. Exactly. थोड़ा सा gear switch करते हैं. You are very good in something else as well, networking. Yeah. You go to a lot of exhibitions. आप बहुत सारे exhibitions में जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों को आप reach out करते हो LinkedIn पे. बहुत सारे नए लोगों से आप मिलते हो. अगर आप एक एग्जीबिशन में जाते हो, हाउ डू यू नेटवर्क? आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि इस बंदे से मैंने मिलना है, इस बंदे से मिलना है, ये बात करनी है, ये बात करनी है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज ऑनलाइन स्पेस में अगर हम आते हैं, अगर हम लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे अगर हम बात करते हैं, हाउ डू यू रीच आउट टू? मुझे तो आपकी कहानियाँ पता है, लाइक एम्बेसडर्स को भी आपने मेल्स की हुई है और LinkedIn पे आपने उनको ऐड किया हुआ है, all the way up to. I have the ambassador of Estonia here in Abu Dhabi. I speak to John Reinfeldt. Yeah. Exactly. So मतलब बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि they can write to an ambassador या CEO. मैं एक दफ़ा एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि यार देखो, you have a brilliant idea, you should write to the CEO of that company और उनको आप ये email लिखो कि यार this is what I can do for you and this is how I can be helpful and see what happens, like क्योंकि CEOs generally इतने disciplined होते हैं कि वो अपने emails को पढ़ते हैं, वो आपके मैसेज को सुनेंगे. Unfortunately I feel कि बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ये समझते हैं कि यार एक CEO भी एक इंसान है and that I can speak to him. Yeah. So इस perspective से how do you, like what kind of attitude do you hold जब आप networking करने जाते हो, like when you want to introduce yourself to new people and new ideas and like you want to reach out to someone? The first thing is that shyness. Yes, it's something everyone has this issue. People are shy. और एक होता है हमारा जो मोस्टली एशियन कल्चर में है ना, लोग क्या कहेंगे. That's the thing. Yeah. वो ईमेल जो नहीं लिख रहे वो कह रहे हैं कि what CEO will think if he see my emails not up to the standard, the grammar and everything. Or even the offline networking. If I give you example of exhibition, I love exhibition. It's like a eat for me. When there's 3-day exhibition, I try to go all 3 days. And the thing there, some of them I already decide who I'm going to meet, which are certain 5 to 6 people per day that I believe these are the potential people that I will pitch a product or try to ask for a collaboration or get to know them because they are here, the big important people. I'm never gonna have the chance to meet them again. बाकी जो open networking है उसमें ये है कि like I would give how did I network with Abu Dhabi police. अब अबू धाबी की पुलिस एवरी एग्जीबिशन दे हैव देयर स्टैंड, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, मोटरसाइकिल होता है, कुत्ते होते हैं. अब पूरी एग्जीबिशन में कब भी मुझे कॉफ़ी चाहिए मैं उनके स्टैंड में जाता था, खाना खाना था उनके स्टैंड में जाता था क्योंकि वो फ्री में ले रहे थे ना. वहाँ पे मैं इसलिए जाता था कि मतलब काफ़ी मिल रही है मज़े की, फ्री में क्लब सैंडविच मिल रहा है. अब वहाँ पे जाके कॉफ़ी पीऊँगा, क्लब सैंडविच पीऊँगा तो वो भी कहेंगे यार ये बंदा इधर आ रहा है, कार है और सलाम दुआ नहीं कर रहा, हु इज़ दिस गाय. So that make me to come and talk to someone. तो मैं गया उनसे बात ऐसा की. The first thing that I do in networking is to start is it's a human nature compliment. Like the person name was Colonel Marwan. He's a big guy here in Dubai. I said to him, oh, Colonel Marwan, because he has Marwan on his page. Very cool. Your dress look very cool. He said, oh, thank you so much. I said, would you mind if we can take picture with you? He
selfie. He said, oh, why not? Hey, boys, he bring 2-3 more. And then we took a selfie, and then I started asking him that being a tourist in Dubai, I feel very safe, so thank you so much to you and your team. Wow. You know what he told me? You come to our academy, and we give you training for free. You can be a volunteer police in Dubai. Wow. Because he said he shows so much interest and respect to our police. Colonel Marwan, I still know that guy. Wow. The thing is that it starts with the person. Compliment would be a good initial starter. I do it a lot. That compliment can come if you are in an exhibition and you see a nice stand. So you can compliment the stand. I do it. Like this is a stand from some ABC company. I don't know them, but I just curious what this company do, what they sell. I just say, hey, everybody, the stand look amazing, nice, very good. I said, oh, thank you so much. And then we start talking. So the first thing that you could see that I use is a compliment. The compliment, you can compliment their stand, you can compliment their product. Maybe you don't even know what is this product all about. Like there was one product, I don't know, it's a cargo scanner. I know about it a little bit, but it's a big cargo scanning machine where they scan cargo in the airport. And I see it look really cool. So I was passing by the stand and I said, hey, look, very cool technology. And the guy said, oh, hey, we can explain to you more, come. And I start talking to him, and he turned out to be a sales engineer from India, and we exchanged cards, and we had each other on LinkedIn. He lived here in Dubai, and it was a mechanical engineering too. And he explained me the whole machine, and then I find out this thing is already using in the airport, which someday maybe I have an inquiry for this. Yeah. Someone say, hey, I need this cargo scanning machine in the airport. Can you sell me? And I say, okay, I have a company in Dubai. I can sell you and connect them both and take out my commission as well, 5% or something. So the thing is that it starts with a compliment, the nice word. Even if the CEO, he also needs someone compliment. So, exactly. At the end of the day, everyone is a human. Yeah. Everyone likes a good compliment. तो ये बात बिल्कुल सही है. How do you take a person that you met in an exhibition? एक exhibition में आप किससे मिले हो, आपने business cards अपने exchange कर दिए. How do you take that relationship to the next level? Like उस relation मतलब हाँ ठीक है, exhibition में मैंने भी 10 लोगों से मिल लिया, हमने बातें वगैरह कर ली. But how do I make a stronger relationship out of that? उसको next step पे कैसे लेके जाते हो? Now you know that I'm in sales for 4 weeks now, 4 or 5 months. How to bring a person you met to next level to collaborate or do business or keep engaged. Mostly it's a standard mostly people do when you go to a networking event, when it's just offline like exhibition, you take your business card, you drop them an email. Make sure it's soon as possible, like the next day or the next 3 days. An email would be nice. If not email, WhatsApp message would be nice. So what I do, I take the photo of the business card that he gave me, or if I was in an exhibition and I do ask for a selfie, and that selfie picture, drop him there and a nice ice-breaking message. Hey, Mr. Junaid, it was nice to catch up with you in the exhibition, and thank you for the business card. Here is this nice selfie that we took. Now there is 90% chance that person will reply, because he will remember that, oh, I met a guy, we take a selfie, we had a nice chit chat, we discuss some product or we discuss some business, and he also know, okay, I give him a business card, so you send that picture to him as well, that yes, you give me the business card. So you make that first impression. And then he said, okay, I replied, thank you so much, nice to catch up with you. In the meantime, we don't have anything to collaborate, but in the future we will stay in touch. Now, what do you mean stay in touch? It's usually how I do is that people usually call me I'm spamming, but it is that how you engage your network. Like once in a week, yes, I do. When there is a festival event like Father Day, Women Day, Friendship Day, I share that to all my contacts to let them know, you have in my contacts, I had to share with you something. And sometimes I share some of my work with them as well. Like for example, if I write an article, I share it to everyone and say, hey, I wrote a nice article, and what do you think? If you have any thoughts on this?
Now it depends on the person to person. Some person see thumbs up, some person say very good, someone share. So you keep that person engaged with you when you say keep in touch. And if there was a person who said, okay, we have something to do business, show me some product, or if it's not you directly, there is someone else that you think will help him, you pass that to him. Okay. So usually I met a lot of people in the exhibition, and then what I do, I pass it to my colleagues. Like for example, if I met a guy from the Arab region, we have a regional sales manager for Arab, so I take his business card, a bit of his detail, I forward it to the Arab regional manager. If I met someone from Africa, I forward it to the African regional sales manager. If I have the person from Asia where I can do business directly, I handle him himself and try to bring conversation from WhatsApp to emails, sharing him company profile, asking him his company profile, and then proceed. So this is the phase right now I'm mastering it actually, because this is my first sale job. I never done a hardcore sales before. I was in a factory, I was working in a factory behind the scene. So this is what I'm mastering, how your network you turn into a collaboration, or how you turn your network into a sale actually, or a deal and then close it. Because this networking, everything is there, but once you close a deal, that's actually the output, which right now I'm trying to mastering it. How to meet people, then try to keep them engaged, and then turn it into a business deal and then close it and have benefits for both parties. That's awesome. ये वैसे में बहुत यूजफुल एडवाइस है. जनरली मैं खुद क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई इस तरह का बंदा मिलता है that I'm very interested in like speaking to or engage with, तो पहली मुलाकात के बाद जनरली वो जो व्हाट्सएप आप लिखते हो या ईमेल आप लिखते हो, उसके अंदर I would include a call to action. Call to action is कि hey, it was nice catching up, we discussed this and that, I would love to know more, would you be able to get together for a coffee next week or maybe in 2 weeks or sometime. पहले बंदा एक soft close कर लेता है कि like hey, would you be okay अगर हम coffee के लिए catch up कर लें. अगर वो बंदा कहता है कि आगे से बंदा, I agree with you. Yeah, if the person is near living by you in your country, exactly. Yes, I do the same. Exactly. But mostly my connection are living overseas in other countries. But that's the right way. Exactly. So for an action. मैं generally वो route prefer करता हूँ, because उसमें जब आप coffee पे किसी के साथ बैठते हो, it allows you to connect with that person to a much better degree. मतलब एक थोड़ा सा informal एक setting होती है, आप बहुत सारी चीज़ें discuss कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें you can talk about non-work related stuff as well. अच्छा, आप काम के बाहर क्या करते हो, कि hobbies क्या, for example, आप फैमिली है इधर, फैमिली नहीं है, क्योंकि जनरली अगर आप बिजनेस मीटिंग में किससे मिलते हो, इस तरह की बातें आप बिजनेस मीटिंग में आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ओवर अ कॉफ़ी आप इस तरह की बातें कर सकते हो. तो मैं वो चीज़ प्रेफर करता हूँ. लेकिन आपके रिस्पॉन्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगी वो कीपिंग देम एंगेज्ड ऑन व्हाट्सएप. Father's Day, Mother's Day. No, sending them my article. Exactly. Sometimes sending them my own wine, like I'm dubbing on some video, funny video. It's the way I keep people engaged, and some of the people even calling me spammer. Yeah. Because if they see they are not interested, so they say, hey, stop spamming me. Because I do the same with my manager as well. So I said, hey, Mr. Alex, I want to stay in touch with you. So I send him my articles, I send him some updates, say new airport is opening in Asia, some new airport is opening in Vietnam. Now these are news of our industry. And sharing them is that you actually try to stay in touch. Yeah. Okay, थोड़ा एक और टॉपिक चेंज करते हैं. आते हैं नस्ट पे. Yeah, that's interesting. आपकी काफ़ी कलरफुल हिस्ट्री रह चुकी है नस्ट में. मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक्सप्लेन करो कि नस्ट में हुआ क्या था इन टर्म्स ऑफ लाइक द स्टोरी के योर स्टडीज स्ट्रगल्स एंड आपके जो पर्सनल स्ट्रगल्स थे. बट देन ऑल्सो मुझे ये भी जानना है कि नाउ जबकि 7 साल गुजर चुके हैं उस एक्सपीरियंस को, हाउ डू यू लुक बैक एट इट. आप जब उस एक्सपीरियंस को वापस रिफ्लेक्ट करते हो उस पर, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, क्या चेंज हुआ, एंड देन हाउ डिड यू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ इट. The story of Nast, yes, it's a colorful, or
इसका ज़्यादा ताल्लुक मेरे बैकग्राउंड से है। सो यू नो आई एम अ विलेजर बॉय, दूर दूर से मेरा ताल्लुक है। एंड वी ग्रू अप इन अ ट्राइबल कल्चर, देहाती माहौल जहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस, ज़्यादातर लोग एजुकेशन है बट अप टू सम लेवल। हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं कि इंजीनियरिंग में डिग्री लेना, MBBS में जाना, दीज आर कंसिडर हायर एजुकेशन। एंड जो बंदा इंजीनियरिंग करता है इट्स अ वेरी बिग थिंग। लोग आपको इंजीनियर कहते हैं, लोग अपना टाइटल यूज़ करते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, इट्स अ बिग थिंग। बीइंग फ्रॉम द विलेज एंड ग्रोइंग अप इन द विलेज, हमेशा जब भी everyone, it's not only me, but when you grow up in that environment, in that place where there is a lack of resources like internet, you don't have access to the world, दुनिया में क्या हो रहा है, and you don't have the access to travel, to go to big cities to see and around to know what's going on. So lower Dir में, you know, growing up, the world was so small, and growing up in that environment, the first time I got opportunity to come to actually a city was in 2005-06 कि पहली दफ़ा मैं आया था तो तब पेशावर एयरपोर्ट कि मेरा भाई सऊदी अरब जा रहे थे तो मैं उनके साथ आया था सी ऑफ करने। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गेट आउट ऑफ लोअर दीर, और मुझे पता चला अच्छा इस पहाड़ों के नीचे भी कोई और दुनिया है। तो मैं पेशावर आया, एंड व्हेन आई वेंट बैक, मतलब आपके लिए पेशावर एक बहुत दूर जगह थी, बहुत बड़ी जगह कि मैं एक शहर में गया। तो द लाइट्स इज ऑफ बट इट्स ओके। या आई थिंक द लाइट बैटरी वेंट ऑफ। और फिर ड्यूरिंग, यू नो, स्टडी मेट्रिकुलेशन, आई वाज ऑलवेज लाइक द क्यूरियस बॉय, क्योंकि हमारे घर में एक यू नो उस टाइम वायरलेस हुआ करता था कि अगर आपका टेलीफोन इंस्टॉल है तो अगर कोई घर से बाहर जा रहा है, ही हैज़ अ वायरलेस सेट, इट्स कनेक्टेड टू द मेन लैंडलाइन। तो उसकी बैटरीज हुआ करती थी जिसको वायरलेस सेट्स चार्ज होते हैं, मेरे भाई लोग अपने साथ बाहर ले जाते थे, एंड वर्क ऑन द रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो हमारे घर में ना एक इलेक्ट्रिक बैटरी पड़ी हुई थी, जो उसके अंदर बैटरी थी नहीं। व्हाट आई डिड एक्चुअली, आई टुक द बैटरीज ऑफ दैट वायरलेस सेट एंड एक चार्जर मॉड्यूल था, उसको मॉडिफाई किया, वो भी उसी ही का चार्जर था जो बैटरी चार्ज करते हैं फॉर द टेलीकॉम। उससे मैंने एक अपना मॉडिफाई वर्जन ऑफ वो बनाई, टार्च बनाई। टार्च तो थी लेकिन उसमें वो सिल होते हैं जो यू नो फेंकते हैं, रिप्लेसेबल। वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी बनी इंजीनियरिंग की, मतलब साइंस समझने की, और शौक़ बढ़ गया। हमारे इलाके में ना एक लड़का था, वो एयरफोर्स की बातें करता था, एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट एयरफोर्स। तो एक दिन वी आर प्लेइंग क्रिकेट एंड ही ब्रिंग दोज बुक्स विद हिम, जब भी याद है ICSB की किताबें उसको साथ लाए थे। एंड आई हैड अ लुक ऑफ दोज बुक, उनके फ्रंट पेज पे जहाज़ों की तस्वीरें थे, यू नो F-16 और फाइटर जेट्स। तो मेरा भी उधर से शौक़ हुआ कि मैंने भी एयरफोर्स में जाना है। एंड टू दैट वन पॉइंट देयर आई गॉट दैट आई नीड टू बी एन एयरफोर्स। सबक तो पढ़ना है ज़रूरी, मैट्रिक करना है, फिजिक्स करनी है, उसके बाद फिर ICSB के लिए अप्लाई करनी है। तो आई स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू यू नो गो टू एयरफोर्स। उसी टाइम से मैंने कंपनी में बड़े बड़े जहाज़ों की तस्वीरें लगाना स्टार्ट कर दी। जब मैं कोई नो नाइट व्यू मार्केट मेला बाज़ार नहीं हो तो उसमें जाते हैं तो जहाज़ों की तस्वीरें देखता था, लाके रूम में लगाता था ना। फ्रॉम 8th ग्रेड मेरे किताबों के अंदर अक्सर लोग किताब पे अपना नाम लिखते हैं कि ये मेरा किताब है, तो दिस इज़ अरशद खान, रोल नंबर दिस, क्लास यू नो सेक्शन B। वहाँ से मैंने अपने नाम के साथ GDP लिखना स्टार्ट कर दी, जनरल ड्यूटी पायलट, क्योंकि जो एयरफोर्स में जाते हैं वो GDP होते हैं। एंड आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ GDP from 8th grade. Now it's about when going to something, getting something, you have to imagine that thing, that you are that person. यहाँ तक वो क्रेजीनेस पैशन बढ़ा कि एक दिन मुझे वैसे वीडियो देखी टीवी पे ना, 6 सितंबर पे 14 अगस्त पे ना वीडियोज़ आती हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो परेड और वो आर्मी और एयरफोर्स दिखाते, उसमें पैराशूट से लोग जंप मारते थे। तो आई वॉज रियली क्यूरियस कि मैं भी कुछ करता हूँ। तो आई फाइंड अ बिग प्लास्टिक, क्योंकि जब आप यू नो हमारे इलाकों में मोती घर कच्चे होते हैं ना, नॉट फ्रॉम कंक्रीट, तो बारिश होती है वो अक्सर सीपेज होता है, तो लोग हैव अ बिग प्लास्टिक शीट ड्यूरिंग रेन एंड स्नोफॉल। सो आई फाइंड दैट वन बिग प्लास्टिक शीट, यू नो, उससे मैंने अपना पैराशूट बनाया। एंड देन आई ट्राई टू जम्प फ्रॉम लाइक यू नो 10 मीटर 9 मीटर क्लिप।
And these were the stories building that passion in education, of course, was there. वहाँ से जब मेरा मैट्रिक हो गया तो I had a really inner drive to study more because अभी तो एयर फोर्स में जाना है. Then I met another person in our village who was an engineer by himself working in atomic energy. उस दिन वो हमारे स्कूल आए थे to give a visiting lecture. तो उसने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला and she showed it to us. Do you know what is this? तो मुझे भी याद है, मैंने गेस किया कि ये कोई बड़ी मस्जिद होगी क्योंकि मैं भी उस टाइम ना बड़ा तबलीगी और वो होता था. मैं उसको एक मस्जिद की तरह दिख रहा है, इस्लामिक कॉलेज. सर नो, दिस इज़ अ कॉलेज, आई स्टडी देयर. इफ़ यू गाइज वर्क हार्ड यू कैन मेक इट देयर एज वेल. इज़ वन ऑफ द KPK टॉप कॉलेज. अच्छा, वो उधर से जहन में आ गया. ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बात हो रही है. ये इस्लामिक कॉलेज से पहले दीर की बात है कि अब मैं दीर में हूँ, अभी इस्लामिक कॉलेज नहीं है. कि वो नोट के ऊपर इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर बनी थी. नाउ दिस थिंग क्लिक. नाउ आई नीड टू गो टू इस्लामिक कॉलेज. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, व्हेन आई हैड द फर्स्ट 1000 नोट फॉर माई सेल्फ, जब वो ईदी मिलती है, ईदी तो घर में ईदी देते हैं, तो व्हेन आई गेट द फर्स्ट 1000 नोट आई कीप इट देयर फॉर 2 years इन माई वॉलेट कि भाई इस कॉलेज में मैंने जाना है. नाउ दिस थिंग दैट यू क्रिएट दैट हिंट फॉर योर सेल्फ दैट कीप यू ड्राइव. तो वो नोट था, वो इस्लामिक कॉलेज की पिक्चर थी कि मैंने तो इधर जाना है. अब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर वेटिंग फॉर माई रिजल्ट. ट्रेंड तो हमारे इलाके में ये है, जितना हमारे कज़न है, कि वो जब मैट्रिक करते हैं तो मोस्टली दे गो टू सऊदी अरेबिया, ड्राइव टैक्सीज. अब मेरा बड़ा भाई है, उसके साथ मैंने शर्त ये लगाया कि अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, आई विल गो टू इस्लामिक कॉलेज. अगर इतने नंबर नहीं आए, ओके, you make my visa and I go to Saudi Arabia. We'll drive taxi, we'll work there in Baqala or something. And we said, okay, challenge accepted. He's my big brother. अब हुआ ये कि जब रिज़ल्ट आया तो I got a really good marks. अपना स्कूल टॉप किया and then the whole region जिसमें 5-6 बड़े स्कूल थे, I topped them all. I had the biggest score in the whole town. तो उम्मीद पैदा हो गई कि मतलब इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी. इस्लामिक कॉलेज गए भाई के साथ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए. तो मेरा एक बहनू ही है, उसने कहा, मुझे साइट पे किया ना, एक दिन मैं से मिलने आया था कि इफ़ इन केस यू डिडंट गेट द एडमिशन इन इस्लामिक कॉलेज, डोंट गो फॉर द सेकंड ऑप्शन. I will pay your money, then go to Edward College, because you will definitely get in Edward College. But Edward College is more expensive. So I got that support as well. अच्छा, अगर उसमें नहीं हुई इस्लामिक कॉलेज में भाई तो फिर मुझे सऊदी भेजेंगे. तो अच्छा, एडवर्ड कॉलेज तो ये है कि बहनोई विल बी लुकिंग आफ्टर द कॉस्ट. क्योंकि जब इस तरह देहातों में लोगों के पास पैसा होता भी है, बट दे डोंट वांट टू स्पेंड द मनी ऑन एजुकेशन बिकॉज दे डोंट सी द आउटपुट. उनको इतना पता नहीं है कि मतलब एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग मनी इन एजुकेशन इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट. और ये ट्रेंड अभी तो बहुत बन गया. पीपल आर सेंडिंग देयर किड्स इवन टू चाइना टू स्टडी एंड अब्रॉड, यूरोप एंड कैनेडा. पर उस टाइम बहुत कम था. तो वहाँ से मैं इस्लामिक कॉलेज पेशावर आया. इस्लामिक कॉलेज पेशावर में भी द सेम थिंग के पढ़ाई थी, काम था. वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है टीचरों से कि मतलब आगे क्या होगा, बिकॉज यूर सेल्फ डोंट हैव दैट एक्सपोजर बट द टीचर, द फ्रेंड्स अराउंड यू. वहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त बने, तो वो भी मेरे जैसे मतलब वांट टू गो टू गुड यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से हॉस्टल के अंदर हमने अपने कमरे में दीवारों पे लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई माई एम्बिशन इज़ नास्ट, माई विजन इज़, माई गोल इज़ GAK. तो वहाँ से ही हमने दीवारों पे लिखा हुआ था कि इस यूनिवर्सिटीज़ में हमने जाना है. एंड दैट्स कीप अस क्योंकि जब आप इस बेड पे सोते हो, उस बेड के सामने दीवार पे अपने लिखा है कि माई एम इज़ टू इज़ नास्ट और माई एम इज़ GAK. तो दिस थिंग वाज लाइक वी ट्राइंग टू गेट प्रिपेयर फॉर दैट. वहाँ से जब FSC कंप्लीट हुई, GAK का टेस्ट दिया और नस्ट का टेस्ट दिया. GAK में मुझे स्कॉलरशिप मिला फुल. मुझे स्कॉलरशिप इंटरव्यू पे बुलाया कि मतलब आ जाओ, आपका स्कॉलरशिप पे शॉर्ट लिस्ट हो गया. उधर मैं गया तो उस टाइम मैं उर्दू नहीं बोल सकता था, थोड़ी बहुत. तो मैं इंटरव्यू में गया. ये 2013 की बात कर रहे हैं. 2013 की बात है. मैं GAK इंटरव्यू में गया ना. पार्टी सेक्रेटरीट से लोग आए हुए, गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए, एक बंदी बैठी हुई, और मैं गया रूम में. ठीक है, अरशद खान. तो दे आस्क मी व्हाई यू डिज़र्व्ड द स्कॉलरशिप.
उर्दू में उन्होंने पूछा कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तो उस टाइम मैं अपने टूटी फूटी उर्दू मैंने कहा मैं कबाइल से आया हूँ, मोस्टली मेरे ख़ानदान जो है कबाइली है, हम ज़मींदार लोग हैं। पहले भी हमारी दुश्मनी चल रही थी, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे शौक़ है इंजीनियर बनने का। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मौका स्कॉलरशिप नहीं दिया, मैं वापस अपने देहात में चला जाऊंगा, अपनी ज़िम्मेदारी वो करूंगा। अबू भी वो है और मैं भी वही करूंगा जो एवरीवन इज़ डूइंग। तो इफ़ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी आई विल बी एन इंजीनियर। ये उस टाइम मतलब इनको इतना पोर्ट्रे किया कि आई डिज़र्व दिस। तो जैसे मैं रूम से बाहर निकला, दैट लेडी फॉलो मी एंड ही सेड योर इंटरव्यू वाज गुड एंड वी बिलीव यू विल गेट द स्कॉलरशिप एंड कंग्रेचुलेशन उस टाइम, बट वेट फॉर द फाइनल कॉल। हम वापस मैं देर चला गया। आफ्टर 2-3 days आई गॉट द ईमेल के आई गॉट अ फुल स्कॉलरशिप इन JK। उधर नस्ट से भी रिजल्ट आया कि आई गॉट अ एडमिशन इन नस्ट। अब दोनों यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गए, दैट आई वांटेड। अब चूज़ करना है कि किस में जाना है। अभी स्कॉलरशिप का मैंने घर नहीं बताया, तो मैंने भाई से मशवरा किया कि आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन JK एंड आई हैड अपॉर्चुनिटी इन नस्ट। अब मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि यू गो टू JK, एक तीर से आप दूसरी तीर में चले जाओगे, क्योंकि JK इज़ इन Swabi, there is nothing outside. The inside university is very good, but overall the location is a very remote area. So there I listened to the brother advice and I said, okay, go to Islamabad, because he said if you go to Islamabad, live there, वहाँ पे ज़्यादा exposure मिलेगा and you will get something more out of your university life and university time. मैं नस्ट आया, तो जैसे नस्ट आया, now being from lower tier, नस्ट में आके और इस्लामाबाद, I got completely shocked. तो catching up with that trend and culture, friendship, क्लास में भाई बैठे हुए, कोई जो है बेकन हाउस से आया हुआ है, कोई रूट से पढ़ के आया हुआ है, उर्दू तो चलती नहीं, हर बंदा अंग्रेज़ी में बात कर रहा है और दैट्स थिंग रियली इफेक्ट मी। मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकता था, इतने तक कि जब पहले एग्ज़ाम हो रहे थे, द इंग्लिश पेपर, व्हेन इट केम इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैड नो आइडिया कि ये पेपर है क्या चीज़। आई जस्ट लेफ्ट इट एम्प्टी एंड वेंट बैक टू माई हॉस्टल रूम। फिर टीचर ने बुलाया कि आपने पेपर खाली क्यों दिया। मैंने कहा कि मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा कि मैं इस पेपर में लिखूँ क्या, आपने पूछा ही क्या। आई वॉज अनएबल इवन टू आंसर टू दोज क्वेश्चन, और वो भी था कम्युनिकेशन 1-on-1 उस टाइम। तो वो पूरा एक सेमेस्टर ऐसा रहा कि उसमें मेरे F आ गए पेपर का रिलेटेड। कितने F आए थे ये ज़रा बताओ। स्टार्ट में एक F आया था। ओके। तो और पूरी डिग्री में कितने F आए थे? 3 है। 3 F। 7 नहीं आए थे? 7 किसके आए थे? नहीं, मेरे 3 है। मुझे तो 7 नहीं आता। अच्छा नहीं, और D ग्रेड कितना है? D तो होंगे 7। हाँ, मुझे सब याद है। You had something that was in 7 subjects. तो ये जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर है सारे पेपर उसमें फेल हुए थे। अब वो लेटर नस्ट ने घर भेजी थी, जैसे घर वो लेटर चला गया, वहाँ से उन्होंने मेरे ऊपर ना रस्सी टाइट कर दी। अच्छा, अब तो इसके साथ ये हो रहा है, ये तो बड़ा काबिल लड़का था, नस्ट में इसके पेपर फेल हुए। तो वहाँ से मेरे घर वाले मुझे टफ टाइम देना स्टार्ट कर दिया। you know how they play the game, right? पैसे नहीं भेजते थे, ये तो वो टेंशन भी आ गए साथ में ना, कि मतलब अभी तो घर से रगड़ा भी मिल रहा है, इधर मैं इस अपनी एक दुनिया में हूँ। 3rd सेमेस्टर में पहुँचा, आई गॉट कम्प्लीटली अंडर द मेस मीन द डिप्रेशन बीइंग इन अ कल्चर शॉक, कि मतलब मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं किधर से आया हूँ, दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, आई डोंट बिलोंग हियर। And I even start questioning myself, do even I deserve this? क्योंकि ये होता है ना, एहसास कमतरी होती है, वो एहसास कमतरी का शिकार, फैमिली वो मसले, स्टडी के और मसले, एंड देन ख़ुद भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मेरे अंदर खुद दिमाग में कुछ ख़राब है। But the thing was I had good people to look after, and to be honest with you, one of them was you, कि अब स्टार्ट में ना थोड़ा सा शौक़ था आपको गाड़ियों का ना, ये फार्मूला 1 एंड जाके उधर, मैंने कहा ये बंदा थोड़ा सा डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी स्टे टच इन फ्रेंड। ताहा था, आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम ताहा। तो कुछ क्लास में लोग थे दैट व्हेन लुकिंग टू देम एंड आई से ओके मे बी स्टे इन टच विद देम, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत
वो दिल को तसल्ली होती थी। तो ये अभी जो पूरा लड़ाई चल रही है मेरे दिमाग के अंदर, ये मैं किसी को नहीं बताता, आप लोगों को भी नहीं बताया, जो क्लास में लोग किसी को भी नहीं बताया, लेकिन अंदर से मेरे अंदर ही डिप्रेशन था एंड पीपल साइड कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो मेरे बहुत करीब लोग थे, जो क्लास रूम में थे लोग, उनको तो पता था कि क्या चल रहा है। वो किताबें रिकमेंड करते थे, गोइंग आउट एंड डू दिस एंड डू दैट, बट आई ट्राई डिफरेंट थिंग। द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट विद मी, आई होप यू नो, आई डिडंट टेल, देन आई टेल लेटर, देन आई ट्राई टू सुसाइड। तो उसमें ये था कि जो हमारी स्विमिंग के साथ वो टैंकी है ना, वाटर टैंकी, मुझे आज भी वो याद है, the way you told me. Yeah, तो उस टैंकी पे मैं गया and I said I'm gonna jump from this place. Now ये रात के 8 साढ़े 8 बजे, नस खुश और हैड सर्दी, मैं उधर गया हूँ, कप पा रहा हूँ सर्दी से, ऊपर बैठा हूँ with a phone and I'm just counting my second when I'm gonna be jumping. So when someone has ever tried to suicide, the suicidal person have create this motivation for himself, even you don't want to do it, but you try to convince yourself why you need to do this. मैं जब उधर अब बैठा हूँ तकरीबन 20-25 मिनट just to convince myself why I need to do this, to get out of this whole mess that I was. And to that level, अब ये luckily that was weekend. तो मोस्टली घर में ये होता है कि वीकेंड पे जब भी यूनिवर्सिटी में वीकेंड पे हम घर लोग से बात करते हैं, घर से फ़ोन आती है या बात करते हैं, उसी टाइम मेरे फ़ोन पे, मुझे याद है नोकिया का फ़ोन था, उस पर कॉल आई घर से, एंड देन रिंग अ बिल कि मतलब यू नो आई एम डूइंग समथिंग एंड मे बी दे गेट सम इंट्यूशन कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, एंड व्हेन दैट कॉल कम्स इन आई पुल बैक एंड देन आई गेट डाउन एंड you know I was like, when you feel like to the level that you're gonna suicide and then you pull back yourself, that's a complete different feeling. And when I went back to the ring, the next day I did was went to the barber shop, shave my whole head. Do you remember? I had shaved head. And this was the thing that when I pulled back and I said I need to do something different. तो वो टाइम तक कि उसमें मैंने head shave कर दिया, delete my Facebook, Instagram, Twitter. I went all underground. I remember for 6-7 months I was completely underground. I started gym, yes. दुनिया से मतलब लोगों से नहीं मिलता था, बस बड़े हेडफोन याद है. I got those headphones from you, and those headphones I really love those headphones. So वो हेडफोन भी तो मजे के थे यार, BBL के थे ना वो हेडफोन, हाँ JBL के वो हेडफोन पहने होते थे और नस में भागता था, पूरी नस का चक्कर लगा, 2 hour running, then come 1 hour weight lifting. उससे मेरी बॉडी बन गई, तो you know I was a builder. उसकी वजह से फिर जब मैं you know come out to the public, people start complaining, oh wow क्या डोले शोले बनाए हुए, oh you looking sexy, good. Now these small things start rebuilding my persona. Okay, maybe I can't speak good English, maybe I can't speak good Urdu, maybe my grades are not good, but there is something in me that people even notice. So I started getting appreciation, and I feel okay now. I feel good about myself, and that's where I lift up things. तो आखिरी साल जो था ना, 1.5 साल, फिर the thing was more aligned. आखिरी सेमेस्टर में I think GPA भी काफ़ी बेहतर आया था तुम्हारा. Last 2 semester GPA was a lot of improvement. What was your lowest GPA? 2.1 something, 2.1 or 2.2. What was the highest GPA? The highest was, I think I crossed 3 in 1 semester. The last one. Yeah, the pura CGPA फिर ऊपर गया, 2.7. And then the last semester I was in complete full motion, because you know I bring that on project idea, would something kill. And everybody proposed the idea, they got rejected, but my idea got accepted. And then people want to be in my project group because they thought, hey, it's a really cool idea. And you were there as well, and we got Aisha as well, and Bundy. Now, the whole story is that the depression, the tension, it's happened to a lot of people. But how you coming out of this? It depends on different people how you're coming out of this. I believe that discipline is playing very big role. If anyone going to that hole, you can call the depression hole, it certainly is your discipline. The person who's going to depression, the number one thing they're gonna do is they detach themselves from people around,
and they get silent, they stop sharing, and they cut connection with family. Now, I've been detached from family for a very long time because I believe they are my enemies because they are the one pushing me to this hole. Yes. But later I find out, no, it's the communication. Yeah. Because you don't have enough communication with the people around you. That could be your friends, that could be your family. That you think that always you are the victim, but you are not actually the victim. Yeah. And this self rejection is was the cause, because I had to reject myself before anyone else reject me. And Esasi Kamtari itself. So those whole many factors contribute to that thing. And then coming out, then was a different story. And then when I find out this is the second chance, I didn't stop. मुझे याद है तुमने रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज की जो जॉब ली थी, रिमेंबर आपने इंटरव्यू की तैयारी की थी, बट देन मैंने वैसे ही हिंट दिया था, या आई कॉल यू दैट टुमारो इज माय इंटरव्यू, वैसे ही हिंट दिया था कि गो टू देयर ऑफिस, उनके सर पे बैठोगे, तुम्हें ये जॉब चाहिए. ओके, अभी इस तरह था. And you went literally every day. Yeah, every week. I said, when are you gonna announce the final candidates? Yeah. And like again, like this story is so fascinating to me because a lot of people have been where you were, लेकिन शायद उनको रास्ता नजर नहीं आता कि how exactly do you get out of this mess, you know? And जिस तरह आपने कहा कि discipline is very important. मैं personally ये समझता हूँ कि yes, discipline is very important, but हो सकता है कि somebody somewhere is in a situation जहाँ पे उनको disciplined रहना possible ना हो. Maybe शायद they are facing a different set of challenges कि उनके लिए शायद difficult हो कि वो रोज़ाना सुबह को 5 बजे उठें और जिम जाएं और 3 घंटे की रनिंग करें, वर्कआउट करें. जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एंड जितने लोगों को मैं जानता हूँ who have successfully pulled themselves out of it, उसमें मैंने यही सीखा है कि अल्टीमेटली जो आपने जिस तरह कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड होके आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक दरख्त बनाती है. ये मेन चीज़ है कि आपने एक छोटी चीज़ ठीक की, बेशक बड़ी चीज़ मिलेगी, आपने एक बहुत छोटी चीज़ आपने एक ठीक की, कल आपने एक और बहुत छोटी चीज़ ठीक की. एक इनफैक्ट यूट्यूब पे एक बहुत फेमस मोटिवेशन स्पीच है, वो एक एडमिरल की, नेवी एडमिरल की, who says कि if you want to change your life, make sure कि सुबह उठते वक्त अपना बेडशीट ठीक कर लो. बिकॉज जब वो आप एक छोटा सा वो कर लेते हो कि आप अपना बेडशीट ठीक कर लो, it gives you that motivation कि मैंने आज के दिन में कुछ ठीक किया है. And then वो दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है. And then you can slowly build up on that. एक दिन आपने बेडशीट ठीक किया, अगले दिन मे बी अपना पूरा बेड ठीक करके जाओ. So I think that's a very very important thing. और मुझे तो personally like the whole reason why I wanted to call you for today's podcast and thank you for being here, वो यही था कि like you are someone who has been through the worst. I don't think that the SME water tank instance is the only one. Now there is many, but that one that was the most serious one, because that time I was naive as well. Exactly, yeah. But the way you have pulled yourself out of it and the way you are attacking your future now, like you know कि आप अपने future को attack कर रहे हो कि भाई I want to be where I want to see myself, you know, in the next 5 years, 10 years. और मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इस तरह की कंपनी में काम करना है, मुझे इस तरह का impact driven करियर रखना है कि जिससे मैं खुश हूँ, जिससे मैं satisfied हूँ. I think this is a very very important learning lesson for anyone who is listening. मुझे ये चीज़ बहुत powerful लगती है, to be very honest with you. Yes, and the thing is that the role of mindset play all the game. Yeah. And how you create the purpose in your suffering, that's what's important. It's not necessary that someone is listening my story and gonna say, okay, that's another motivational story. But what I want to teach with my story to people is that how you create the purpose in your suffering. Everyone is suffering. There is no, life is hard. Everyone knows it. Okay. But how you are suffering, everyone is suffering. This is something I learned in Buddhism when I was in Thailand. How you create the purpose. If you say, okay, मैं इधर हॉस्टल में हूँ, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, कभी मिल भी नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे 4 साल लगाने होंगे being an engineer or being a computer scientist. But if you feel like this is a bit of suffering, गर्मी नहीं है, बिजली नहीं है, but
how you see the purpose in that suffering. If you see the purpose, you will never feel demotivated. You will be feeling happy even if you sleep on the road, because you have the purpose why I'm doing this. And if someone have the capacity to make an impact or want to do something different, usually the problem with the people is that those who want to make big impact, those are the ones more suffering from depression and stuff, because they want to do a lot or they want to be more productive, but they don't see that thing in themselves and start questioning themselves. The one thing that I believe is important to be surrounded with people जो आपको encourage करे, आपको push करे in trying to bring the best in you. और मेरे थे दोस्त, उसमें से एक ये था कि I was always to see to you, I was inspired because you were always trying to do something very different कि जिसको यूनिवर्सिटी में पता नहीं था. Like even when I came to engineering, I said, I want to be an engineer, gaadi shadi. But the thing you did, really, you were there playing with, the Formula 1 prototypes. Then the first thing you bring to NAS that even in mechanical engineering, no one was even talking about. That time you were talking about artificial intelligence. So these discussions that you usually do, I wanted to know, you have this quest for learning, and then you have friends in your category. Some of them are the friends that you go out and have some nice chit chat. Some of the friends that you look and say, hey, these are the people that you can actually, see and look up to them. So इसलिए हमारी बनी थी, and then I didn't cut the, I've been through all the things, but in friendship I believe in socializing, that if you feel to be with someone that actually make you feel good, try to make more friends, try to be with more friends. क्योंकि mindset का बहुत mindset का बहुत ज़्यादा importance है इसमें, because you need to be around with positive minded people. अगर आप एक जगह में हैं जहाँ पे सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये जगह ठीक नहीं है या ये नहीं ठीक या वो नहीं ठीक, now all of them have this perception, and then it also make your perception कि अच्छा ये तो मतलब everything is so bad. So that's why you need good friends in your circle, especially positive minded. Yes, you need to know the reality as well, but the good friends actually try to help you to push forward. Exactly. Thank you for the kind words. Coming back to something that we were already discussing, okay, if you look at this entire podcast that we do today, what would be the main message that you would want the audience to take away from this? The main message would be, to summarize it, is that when you try to perceive the world around you the way, it becomes that way. For example, I will give an example. When I went back to Pakistan recently, and recently when you go to Pakistan, अब सब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से निकलो, ये तो बिक गई गवर्नमेंट, तो ये है, जॉब नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. The thing is, now this become one buzzword among everyone, and I try to talk to everyone. मैं टैक्सी वाले से बात की, मैं चाय के ढाबे बैठता था, लोगों से बात की, दोस्तों से बात की, जिन नए लोगों से मिला, एक नाउमीदी है लोगों में. Now this has become a thing in the people head, in the brain. तो अगर उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, वो उस पर यकीन नहीं करेंगे. They won't believe it that this is an opportunity. First, when you have this interesting point. When you have this negative mindset, then you don't see the open doors. Everything, even if the door is open, it look to you as locked. तो जब मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गया तकरीबन 4-5 साल बाद, to be honest with you, when if someone want to go abroad, पाकिस्तान से निकल चाहता है बाहर काम करने, go work anywhere in the Middle East, in Europe or Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, Thailand, anywhere. After some time, you will realize, and when you go back to your own country and living in abroad, when you feel that it's nice, you can blend how much you can blend into your culture. If it come to me, I call myself the blending specialist. मैं जब थाईलैंड में था, मैंने थाई ज़बान सीखी. मैं थाई लोगों के साथ इस तरह सोशलाइजिंग करता था कि थाई लोग कहते थे कि you are almost Thai. कुछ कहते थे कि अरशद you are half Thai,
and half in other national. उनको इतना वो हो गया कि I blend into that culture, but still you will feel that you are a foreigner expat. Yes. And then you learn from those people as well why they are so successful. और वो जो चीज़ मैंने थाई लोगों में सीखी, that I believe is one of the famous one in Thai people. They are so friendly and so positive mind. वो चीज़ सारे जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं जब वापस पाकिस्तान में गया and I was start looking things with a positive mindset. मुझे अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई. मैं पाकिस्तान में करीब आराम से नहीं बैठा. एवरी सेकंड डे आई वाज डूइंग समथिंग. नेटवर्किंग स्टार्ट की, सरीना होटल तक, फॉरेन ऑफिस तक, जहाँ पे नया इंक्यूबेशन सेंटर खोल रहा है उधर जा रहा हूँ, जहाँ पे कोई कुछ भी हो रहा है. नस तक मैं पहुँचा, उधर भी एक इवेंट था, उसमें भी जाके पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे रेक्टर से मिला और लोगों से मिला. द थिंग इज इट्स ऑल द शिफ्ट इन माइंडसेट. I know everyone has challenges, or every country or every nation have challenges, but if you just without checking it by self, और आप भी वो perception बना लो क्योंकि सारा मीडिया ये कह रहा है और सारे लोग ये कह रहे हैं और आप भी कह रहे हो कि मतलब हाँ इस तरह है, तो you will never experience the reality yourself. जो मैसेज है ये है कि try to explore the world by yourself. और students especially यूनिवर्सिटी में हम बड़े बर्गर होते हैं एंड द रियलिटी है जब हम बाहर निकलते हैं इट्स टोटली डिफरेंट. सो इट्स नाइस टू हैव सम रियलिटी टच. स्टूडेंट मोस्टली ये होते हैं कि वो समझते हैं कि बस हमने तो डिग्री कर ली, अब जैसे ही जॉब में जाएंगे तो वाइट कॉलर और ऐसे में बैठे होंगे. नो, इफ़ यू वांट टू लर्न यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. उसमें अपनी ख्वारी भी करनी है, उसमें आपने you have to give more than expected. And it depends how you start in that delivery of your own potential. So the whole message is stay positive, stay optimistic, and try to think positive, and let's see the world opens to you, because once you think positive, you create that harmony in yourself with your people surrounding. And instead of complaining, you try to find solution, and then on the positivity, I remember taking a step back, many people complain that Pakistan especially or in other places airport staff बहुत rude होता है, बुरी होता है बहुत. But I remember that you went to Pakistan and you were so happy कि एयरपोर्ट स्टाफ के साथ you had a very positive interaction and everybody was welcoming, and like does that also come as a result of your positivity? Yes, I have 2 small vlogs on my LinkedIn profile, and to be honest they were surprised. अब मैं जैसे काउंटर चेक इन काउंटर पे गया. Now I am positive. The thing is, when you are positive, you believe everyone is positive. When you are happy, you believe everyone is happy. When you are sad, like when you had a heartbroken from your girlfriend, you believe everyone is heartbroken. But that's the thing you feel. When you feel one inside your mind, in your heart, you believe everyone feel the same as you. But it's not that way. So when I went to the airport and I was trying to check this state exactly, how our airports are that bad. To be honest with you, and I was taking picture as well. In Pakistan में ये allowed भी नहीं actually. I was stopped by the security. Hey, don't make picture, because they thought there is someone making some video and talk bad. So I told the security guard person, hey, I'm the guy who's talking positive, not the bad thing. तो उसने मुझे इजाज़त दी, मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई. And the story was when I went to the check-in counter and they checked me in and they took their time, because I know I'm from aviation industry, so I know it takes time. Certain process has certain procedure and it takes time. After that, I said, hey, would you guys mind if we can have a selfie? And the lady after that come with me, give me an escort and take me to the immigration and to the boarding area and say to me, sir, no one has ever given us that much appreciation. No one have ever asked her for a selfie. Wow. The lady was walking with me. कहता है यहाँ पे हर लोग आते हैं तो वो समझते हैं कि बस हम इधर इनकी कोई मतलब वो बैठे हुए हैं, like the attitude they had. So the thing is that
the overall attitude, if you talk about airports and the service, it's not that bad that what people perceive, or it depends on you how you present your situation. मेरे situation भी है कि मैं flight पे late आया, मेरी flight miss हो गई. Recently I missed airport, but I didn't make any noise because I know it's my mistake. I come late. They say you have to come 90 minutes before. I late 15 minutes. I said sure. When is the next flight? We need to understand our mistakes when we make it and try to not impose our authority on someone else. And then Arshad, there is so much to talk about and there is so much to say. Lekin I just want to say thank you for coming here today. I think it's been 2 hours that we are having this podcast. तो ख़त्म होने का टाइम हो गया. In fact, हमारी दूसरी कैमरे की भी बैटरी ख़त्म हो गई है. So I don't think there is a shot of me speaking this out loud. But for the audience, I hope you found this podcast useful. I hope there was something that you learned out of this podcast. And इसके आगे अगर आपके पास कोई ideas हैं, if there are more guests that you want to sort of hear from, or if there is any particular topic जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो, please do mention it to me ताकि मैं उस पर ज़्यादा और research करूँ और उन चीज़ों को मैं आपके लिए available करूँ. This was Arshad Khan, aka GSEman. GSE के टॉपिक पे तो हम आ ही नहीं सके. इसका personal brand, उसके ऊपर इंशाल्लाह किसी और दिन हम फिर पॉडकास्ट करेंगे. But when we have a next one on personal development, career counseling, then we can talk about personal branding, 100%. How it is important. But thank you so much for coming, and I think let's call it a day. Thank you so much. Wrap it up. It was a nice discussion. Likewise. Thank you. Yeah.